this is a huge ray of hope, not just for A, B, or C political party, but for democracy itself. It's a huge ray of hope for citizens of this country. Because this whole scheme, which was the brainchild of my late friend Arun Jaitley, was in fact choreographed to enrich the BJP. Because everybody knew that the BJP was in power and that any donations through electoral bond scheme would come to the BJP. But the interesting part is that this electoral bond scheme had nothing to do with elections. It was really the bonding between the corporate sector and the BJP, which received the largest number of donations. And the donations they received over the years amounts to about 5,000 to 6,000 crores. Now, with 5,000 to 6,000 crores in your kitty, which is not to be used in elections at all, right? You can topple governments, you can build your infrastructure as a political party, you can build the infrastructure for the RSS, you can set up your communication network throughout the country, and you can do what you like in terms of the use of money toppled, and there's no accountability. So I think to that extent it's something that's significant has happened in terms of the future of our country, because funding should be done in such a way that it does not skew the free and fairness of the election. Because free and fair elections is the basic feature of our Constitution. Now the question that arises is, the income tax amendment has been set aside, has been quashed. The amendments to the Companies Act have been quashed. The amendment to the Representation of Peoples Act has been quashed. So you go back to the old law now, right? What's also significant is that the State Bank of India, through which the bonds were sold, has to disclose the details of the bond and in whose name they stand to the Election Commission of India within 3 weeks of the date of this judgment. And within 1 week thereafter, the Election Commission has to display it on their website, which means we'll get to know as to who gave whom to which political party. And this doesn't apply only to the BJP. It will apply to state governments also, where political parties have been funded, whether the Congress was in power or the BJP was in power or other parties were in power, right? So we'll get to know the bonding between those who funded and the politics of the country. And also, you will get to know the quid pro quo, because nobody gives these huge amounts of money without a quid pro quo, right? Nobody would give an electoral bond for 10 lakhs or 15 lakhs. It'll be in crores, right? So if you've funded your political party with 5,000 to 6,000 crores, you can imagine only the rich could have done that. And they must have in the process got some favors. And that's exactly what the Supreme Court says, that nobody gives this kind of money without a possible quid pro quo. Now, what that quid pro quo is something that needs to be investigated. So I think in a sense, this it provides for a level playing field in democracy, right? And it also exposes the BJP to perhaps the biggest, the Prime Minister keeps on saying, where is the scam, where is the scam? Or where it is now, Modi ji, right in front of your eyes, your scam, this government scam, the scam that you used for the purposes of political aggrandizement, the scam that you used for the purposes of persuading people to join you, apart from the ED and apart from the CBI. Since you spoke about this, you termed it as a scam, and 2024 election is round the corner, what kind of implication we can expect of this order? Huge implications. I request all political parties to really start a national movement as to how the BJP has stymied democracy, how the BJP, by the use of this kind of money, has built infrastructure for themselves, and how the citizens of this country have been fooled, right? So I think that
this has to be a national movement, and I request all political leaders of this country to be part of this. This should be the discourse in every election, in every constituency. जिस तरीके से अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, इलेक्टोरल बॉन्ड को कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेप डाउन किया है, आप कैसे देखते हैं इस डिसीजन? मैं समझता हूं कि एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। आपको याद होगा कि जब ये संशोधन लाया गया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में संशोधन लाया गया था, और इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन लाया गया था, कंपनीज एक्ट में संशोधन लाया गया था। इस नजरिए से लाया गया था कि इसके द्वारा जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो निश्चित रूप से पैसा भाजपा को देंगे, क्योंकि भाजपा की सरकार थी। तो ये मेरे दोस्त लेट अरुण जेटली जी का ब्रेन चाइल्ड था, और इसका नाम रखा था इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम। तो इसका इलेक्शन क्यों लेना देना नहीं है? क्यों नहीं लेना देना? क्योंकि इलेक्शन में तो हर कैंडिडेट को 95 लाख से ज्यादा तो खर्च कर नहीं सकता, ठीक है ना। और जो एमएलए है वो 45 लाख से ज्यादा नहीं कर सकता, वो भी वाइट में खर्च करेगा। तो ये तो सारा वाइट का पैसा था, तो ये तो वहां जा ही नहीं सकता। तो ये तो इलेक्शन से कुछ ताल्लुक ही नहीं है इसका। इट्स अ बॉन्डिंग है, तो बॉन्ड करना था अपने आप को नजदीकी, क्योंकि जो भी पैसा देगा वो टेलीफोन करके बात भी कर सकता है, राइट। उसकी बात भी सुनी जाएगी, उसके काम भी होंगे। तो निश्चित रूप से ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो आज रद्द की है, तीनों इनकम टैक्स, कंपनीज एक्ट एंड रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट की अमेंडमेंट रद्द कर दी है। तो अब क्या होगा कि 3 हफ्ते में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जानकारी है कि किन किन लोगों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे और किस पार्टी को दिए गए, वो सारी जानकारी 3 हफ्ते में इलेक्शन कमीशन को दी जाएगी। और 1 हफ्ते के बाद उसके 1 हफ्ते के बाद ये इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पे उसको रखेगी, ताकि जनता को, आम सिटीजन्स को पता चल जाए किसने कितना पैसा दिया। साथ में एक और भी अभियान शुरू हो जाएगा कि किसने कितना पैसा दिया और किसको कितना फायदा हुआ, ये भी साफ जाहिर हो जाएगा। क्योंकि जिन लोगों ने पैसा दिया उनके प्रति सरकार ने फायदा भी दिया होता। ऐसा तो है नहीं कि पैसा लेकर कोई फायदा नहीं करता। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इसके पीछे तो क्विड प्रो क्वो हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहा कि है, हो सकता है, और वो पता चल जाएगा। तो मैं समझता हूं कि बहुत ऐतिहासिक फैसला है, और मैं सब राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि इसको एक राष्ट्रीय अभियान, राष्ट्रीय मूवमेंट के द्वारा इलेक्शन में बताया जाए देश की जनता को कि किस तरीके से बीजेपी ने, ये तो मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा स्कैम है। मोदी जी हमेशा कहते रहे हैं कि कहां है स्कैम, वो बीजेपी के खिलाफ, तो ये साबित हो गया। कहां है स्कैम, ये तो आपके द्वारा ही है स्कैम किया हुआ। और ये एक राष्ट्रीय मूवमेंट बनना चाहिए, और सभी राजनीतिक दलों में इसमें शामिल होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News24।